excited. And you? No, definitely, I guess it shows that how audience is accepting us. So खुश है. I guess 5 तक आया तो फर्स्ट तक आना चाहिए जल्दी. अरे आएगा यार, थोड़ा तो धैर्य रखो. नए लोगों के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है. अभी मुझे बोले सर, बहुत अच्छा सवाल है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये सब करने के लिए? खैर मेहनत की कोई ऐसी डेफिनेशन तो नहीं रहेगी, बट डेफिनेटली दिन रात क्या है वो नहीं पता चलता बहुत है. ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा. you know that इतनी defines everything. खूबसूरत एक्ट्रेस होगी, किसको पता लगेगा दिन रात बात कर रहे हैं. हाउ इज इट फॉर यू? It was a journey, experience. I don't have words to explain it, but it was wonderful. जिस तरीके से लोग हमारी ट्रेलर को एक्सेप्टेंस दिखाया जा रहा है, I'm like loving it. Like I'm super excited. Like I don't have words. बट शुरुआत में ही यू नो व्हेन यू डू अ मूवी लाइक अ स्कैंडल, तो कई बार टाइपकास्ट हो जाते हैं, टैग्स लग जाते हैं, उससे डर नहीं लग रहा था कुछ? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि अभी वो टाइपकास्ट वाली कोई बात रही है. यू नो हाउ डिफरेंट जॉनर फिल्म्स एंड हाउ दीज, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस बाय द ऑडियंस. आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, उन्हें मजा आता है, दे एंजॉय इट, यू आर डन. राइट. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन See, दैट? every movie have a story, and this is a story. So look at it as a story, not like it's bold, it's glamorous. It's more than that. इट्स मोर देन दैट. और बोल्ड और ग्लैमरस तो है यार, मतलब वो तो कह ही देंगे यहाँ पे. द डायरेक्टर, द कैप्टन ऑफ द शिप, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ज्यादा मेहनत की है. ईशान त्रिवेदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं सर. मैं सच बताऊं, अभी आपसे मुलाकात हुई, ट्रेलर पहले भी देखा था, मेरे साथ वालों ने भी देखा था, मुझे लग नहीं रहा था एकदम ऐसा शालीन इंसान ने ये बना दिया सर. खुद कितना इसमें मेहनत की है. नैनीताल मेरा भी होम टाउन है. ओए तू तो सर बात ही खत्म हो गई. तल्लीताल या मल्लीताल? मल्लीताल सर. अच्छा. अब मुझे बताइएगा आप, ये कौन कौन से एरियाज में कुछ ऐसा होता है सर? मैं ढूंढ के थक गया. ये नकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल, चाइना पीक, तल्लीताल, मल्लीताल, सब जगह. ठंडी सड़क, मॉल रोड. राइट. ऑल द कपल्स यू नो दे गो टू दीज प्लेसेस. जैसे हमारे यहाँ रेक्लेमेशन है और बैंड स्टैंड हम लोग जाते हैं. सॉरी, हम नहीं, यू नो एवरीबडी डज इट, लेकिन नोबडी वांट्स टू कबूलोफाई इट. ऐसे यहाँ पे जो बोल्ड सब्जेक्ट है, इसके बारे में सब कोई बात करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, बट मजा सबको आ रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से? इतना बोल्ड सब्जेक्ट सर. This is a story about desires. Wow. When you say desires. And what See, they, that word what he they said, do to you desires. in your life, you know. So bold, not bold. The story is not about boldness. The story is about desires. तो अपना पर्सनल लाइफ से कितना इसमें मसाला डाला है? मैंने? हाँ. इसमें तो भूत हैं, इसमें तो बहुत सारी सर चीजें हैं. भूत छोड़ो, आप दूसरी बात करो. भूत भी करते रहेंगे. हाँ. Personal life से is basically based on a story which was narrated to me by a friend of a friend. Okay. You know? Okay. So that got me excited, and I started thinking about it. Right. Right. When you talk about भूत, you know, इस genre को जिस हिसाब से एक इंसान है जिन्होंने जितना you know उसके अंदर गहराई से देखा है, किसी और ने नहीं देखा. And we have that gentleman with us over here. So give it up for Mr. Vikram Bhatt, ladies and gentlemen, the uncrowned king, I would say, as a haunted horror films जो ये genre है. हाँ? Crowned सर. मैं यहाँ पे अभी क्या बोलूँ? आपने ट्रेलर देखा सर? नहीं देखा अभी तक. So we'll do one thing, we'll play the trailer once again. लेकिन when someone, you know, जैसे ईशान है, ये ट्राई करते हैं कुछ ऐसा बोल्ड सब्जेक्ट, थोड़ा एक स्कैंडलस सब्जेक्ट, तो लगता है यार नया आदमी है, पता नहीं उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा, कुछ करेगा नहीं करेगा. एक्चुअली नया आदमी ही कर पाएगा, क्योंकि हम तो अभी स्कैंडल से ब्लंट हो गए हैं. कुछ स्कैंडल्स लगता ही नहीं हमको, सब ठीक ही लगता है. तो स्कैंडल देखने के लिए भी आंखें चाहिए, जो नए आदमी में होती है. जी. तो ज़रूर आई एम waiting to see what it's all about. Right. Talking about your connection with the भूतियापंथी, ये कैसे सर? ये कहाँ से, मतलब वो एकदम इंट्रिग किया, क्या हुआ? सेफ है ना भूत लोग? कैसे? कि उनका एक कैरेक्टर है कि ये डराएंगे. एक्चुअली डर तो इंसानों से लगता है, क्योंकि वो कैसे भी हो सकते हैं. भूत सेफ होते हैं. सेफ है? सिर्फ विक्रम जी बोल सकते थे ये बात यार, भूत सेफ होते. कितनों को भूत सेफ लगते हैं यहाँ? जो भी मन में कह रहे हैं ना, अभी रात को आएगा देखना, आज भूत ही आएगा, ये और कुछ नहीं कह रहे हैं उनके पास आएगा. हाँ, उनके पास जरूर आएगा. ईशान, विक्रम जी इज हियर, एकता इज अबाउट टू जॉइन अस. यू नो सब लोग इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से? I'm happy. एंड फॉर यू रीत? Super happy. Thank you so much. बवेजा साहब, मतलब पहला ट्रेलर और आग लगा रखी है. देखिए वो जो डिजायर्स बोला था, तो वो सब दिख रही है. So we all are happy, I guess. Right. So what we'll do is we'll be seated अभी, and then let's take a look at that song जिसकी हम लोग बात कर रहे थे. We'll play that song and फिर इस समय को, जो समा है, इसको आगे बढ़ाएंगे. What do you say? Can we play the trailer again? We'll do that for Vikram sir. Huh? Please be seated, sir.
रात बेईमान और तू मेरे साथ है, कब से तब प्यासा आज मिली बरसात है, आज सी जगह के मेरी प्यास सी बुझा के गुड नाइट कह के सो रही है, ये भी कोई बात है। चल ऐसा करते हैं डिम करते हैं राइट, आने दे मुझको बेबी अपने लेफ्ट साइड, सर रख ले तू मेरी बाहों पे, ऐसे न शर्म कर कर मुझे हग टाइट। It's a I long managed. night, it's a long night, it's a long night, it's a long night. ऐसे ना देखो कुछ कुछ होता है, आजकल यार न मेरा सोने देना सोता है। इट्स अ लॉन्ग नाइट यार, अमेजिंग। मतलब सिंगर अपने लिए खुद ही गा लेते हैं यार, आप लोग इतना कमाल कर रखा है ना है ना? नेक्स्ट में वेरी गुड। नेक्स्ट में अभी से प्लान सुन लिया। ईशान, वापस से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यहाँ पे आए, डायरेक्टर ऑफ द मूवी ईशान त्रिवेदी, लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे बोले इंसेस्ट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट टॉक अबाउट ओपनली, तो कभी नहीं, यू नो, इसमें इंसेस्ट का भी कुछ हिस्सा है कुछ? Let's leave it for the film. अच्छा, Hmm? है ना? Yeah. हाँ, okay. So that is something a lot of people do not, you know, come out and talk about. और वो यहाँ पे हमने देखा कुछ ऐसे बिखरा है. So yeah, I should say about it, I mean, incest is there in our society, just that we just keep it as a secret. I think every girl somewhere or the other go through things that we don't talk about. We hide it from our parents because we are kids. Practically it is there. So yeah, in our film we have shown it in a different light as a story, but yeah, I do approve of the fact that incest exists. Baweja साहब, आपके views on the same? I guess we talk about many issues. You know, we make a lot of films on many social issues. Yeah. This is also a thing which is very concerning, and it's we are not glorifying the act in the film. You know, we are talking about it. It's an issue which should come out. Right. People should know, and definitely it should be stopped at a very early level because we all know what it is. Right. Vikram sir is also here. Sir, मैं आपसे request करूँगा आप अगर यहाँ पर आएं. जी बिल्कुल, मैं आपसे reaction जानना चाह रहा हूँ कि अभी you saw the trailer and you being an expert in the genre. Oh, really? Yes, you are. We all love your movies. जी, क्या अभी your first reaction on after watching the thing? My first reaction is that it definitely has an intriguing story because I don't know the story of the film, so I want to know more. I want to know what's going on. I can see that there's a girl who is dead, and there's some spook element. Then there is some triangle going on, and I can see that Reet is not letting people sleep, or people are not letting Reet sleep. So there's an insomnia angle also. So there is a lot of things going on, but it definitely creates an intrigue factor. It's also shot nicely. It's, you know, there is the location is adding to the character of the film, which is always a good thing because people come to see, in my opinion, they come to see something in entirety. You just don't want to see a plot. You want to see plot and a good story and well shot. So I think it looks like a complete package to me. Right. Sir, Ishan sir, पूरा full marks एकदम मिल गए यहाँ तो. Thank you so much. It's like आप मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर भी थे. अरे वाह. He was the Dialogue writer on Gulam. वो सर वी ऑल लव्ड इट, और वो माचिस वाले के चक्कर में कितनों की जुबानें चल गई. क्या बताएं. एनीवे, यहाँ पे इट्स ओवर टू द मीडिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट लेडीज एंड जेंटलमैन. वन मोर टाइम एंड नाउ इट्स ओवर टू यू. जो भी शक शुबा सवाल हैं, यू कैन शूट नाउ. अरे she'll be here. She'll be here. She's on the way and she'll be here. Good question. Actually, these surnames and related to the industry, they don't actually make the journey easy. I'm sorry, Sure. I have to leave for a post-production thing that's going on right now. So I just came to wish you all, and I want to wish Please. all of you all a fantastic release and great box office success. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Yes, surely. Thank you so much, sir, for gracing the occasion. Thank you. Ji,
जोनी आप सवाल का जवाब दे रहे थे. Okay. So yeah, Johnny, you were saying something. Okay. We'll. Wow. Ekta is here, ladies and gentlemen. Zordar taliyan for Miss Ekta Kapoor. Welcome, Ekta, and straight away, you know, I would request you to grace the stage. Yeah. You know, we just saw the trailer. Vikramji saw the trailer, Ekta, and he loved it. And everybody is like, "Abhi Ekta ka kya reaction hoga?" So we'll surely know your reaction. And we also showed them a song, an exclusive song for them, and they all loved it. Abhi, we'll talk to you about that. We'll show it to you again. Well, we have another surprise for you guys, जो still वाले भाई लोग हैं हमारे. You know, एकता का जन्मदिन हम लोग celebrate करने वाले हैं. हाँ, थोड़ा सा belated हो गया, but we gonna cut the cake. So that's another, you know, plus thing for this event. So can we have the cake, please, for Ekta? And everybody has to sing for Ekta, man. Come on. And we'll start. She's a superb, and she's a superb singer, Ekta, let me just tell you. So, yeah, she is. Reet, Johnny, Ishan sir. Sing Long Night. He can rap. Do that. And Okay, Johnny guys, can हो rap. जाए. Let's do this together. Yeah? पहली बार ऐसा birthday पे कुछ अलग types. Okay. Here we go. Okay, just for you. This is a rap from the film. I'm gonna rap, you're gonna cut the cake, she's gonna sing further. Yeah, Wow. do that. एक रात बेईमान और तू मेरे साथ है, कब से था प्यासा आज मिली बरसात है, आज सी जगह के मेरी प्यासी बुझा के गुड नाइट कह के सो रही है, ये भी कोई बात है? चल ऐसा करते हैं डिम करते हैं लाइट, आने दे मुझको बेबी अपने लेफ्ट साइड, सर रख ले तू मेरी बाहों पे, ऐसे न शर्म कर कर मुझे हक टाइट. It's a long night. It's a long night. It's a long night. एकता इससे long नहीं हो पाएगा, हो जाए. Whoa! Happy birthday to you. मैं डर गया, आवाज इतनी अच्छी कैसे हो गई? Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party like we feel the vibration. Lights are bright, feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Thank you so much. The happy birthday song. है ना? Now back to this amazing press conference that was on. और एकता यहाँ पर आ गई हैं तो बड़े सारे सवाल जवाब अब उनसे करने हैं. And I know you people are waiting to ask your दिल का सवाल. Go. I don't know, I'm not yet 40. Yes. I'll keep it to this film. I'd like to say that
I think we should express the social fabric of our country, and there is good, there's bad. I think sometimes we can confuse in this country sex with sexual crime. You know, anything consensual after the age of 18 should not be anybody else's problem. And so I think the problem of, in order to be emancipated, you have to accept different lives and different lifestyles. And I wish Reeth and Johnny and Ishan sir the best. The endeavor. I'm sure they've made a fantastic film. Thank you so much. Next question. Ekta ma'am, we recently launched a very supernatural show. So, would you like to do a supernatural erotic films in the future also? Is there anything I've done it? May have not worked, you may have not liked it and must have gone unnoticed, but I've done it. Ekta, Balaji is the main producer for the film, but what is the contribution of Phantom Films? What is the involvement in that of Phantom? I and Anurag have discussed that we should have only one spokesperson instead of having various people talk, and that's why I've decided to have a no comments stand to everything. But that's all I'll say, because there's a smart and carefully decided, what should I say, soft and subtle approach to everything. So I don't want to make comments and then say something unnecessary. But Ekta, is it true that Balaji is mainly producing the film, but your certain fees has been paid to Phantom? And how true is it? La 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 la. But yesterday, I'm going. I have to go for a producers meet. As you all Ekta, just know. one last thing that I'd like to ask you. एक- You know, newcomers debut कर रहे हैं एक bold picture के साथ, बहुत ज़्यादा scandalous है. So what do you have to say? कुछ tips देना चाहोगे? Because मैं typecast हो जाता है. actually I believe that, you know, I actually decided to come to the press conference when Reeth called me, because I actually believe that, you know, by next year I hope to launch some newcomers. I think our industry needs fresher, newer actors, and it doesn't matter what genre they get launched in. I hope both Johnny and Reeth, who I've known for many years, I haven't had a chance to work with them, do very well in life. And even though I'm going through a lot in the last couple of days, I couldn't cancel on them, because I feel at a certain age, however young or old, I want to specify, you have to start encouraging fresh talent or supporting. I haven't yet been able to encourage that much. I hope to support them. Thank you so much. Thank you so much. Ekta, Show the trailer, yesterday, please. She'd like to say, yeah? I would like. Why not? Why not? Thank you so much, ladies and gentlemen. Ekta, question for you, please. Can we? Yesterday you saw the film. Is it true that it has been inspired from real life politicians in Punjab? That guy, or like, there's more to it, yeah. I got that, yeah. So I'm hoping you guys do a brilliant job, and I hope the film does very well. Thank you so much. I'll have to run. Well, Ekta liked it, यार. So अभी तो इस फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद सेंसर इस फिल्म के लिए कुछ नहीं करेंगे। Guys, like really, मुझे क्यों इसमें नहीं पढ़ना मैम? I'm sure इन्होंने अपना सेंसर करवा लिया है। cool है. Thank you so much, Ekta. Big round of applause, ladies and gentlemen. A scandal की star cast के लिए. Thank you so much for your patience. Loved you guys. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.